Now, while we speak of Nepal, Nepal continues to remain in a limbo even after 2 days of violent protests that led to the resignation of KP Oli as Prime Minister. Now, curfews back in Nepal from 11 in the morning to 5 in the evening and again from 7 onwards. Streets are tense, security is tight, but Gen Z protesters remain defiant. The army is holding political parleys, but the young demonstrators are clear. They want Parliament dissolved, a new cabinet under former Chief Justice Sushila Karki and a Gen Z panel to oversee governance. But there's confusion. From Chief Justice Sushila Karki is the front runner, but here's the twist. Sources close to her say, no call yet, no invite, no green light. Online votes may be done, but no one's actually spoken to her. And while the power puzzle deepens, Nepal's intellectuals have issued a sharp appeal, urging the president to step in and form an interim government. They've appealed to not let the army lead the process, calling on president to call fresh polls, which they say is the most constitutional way forward. नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हुई, ये यातायात ऑफिस अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ का ट्रैफिक का ऑफिस है, जिसके हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी गाड़ियों को यहाँ पर जला दिया गया। यहाँ से सभी तरीके के जो सामान है वो ले लिए गए और कहीं ना कहीं आप जो देख सकते हैं वो सारा स्ट्रक्चर अभी पड़ा हुआ है, लेकिन सब जला हुआ है। ये पूरे यहाँ से यातायात सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब ये हालात हैं कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, यानी कि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ नेपाल में इस तरीके का है। जो ये अवशेष हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से उपद्रव हुआ उसके बाद की ये स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो तोड़कर एक तरह की ये ट्रैफिक ऑफिस है नेपाल का और ट्रैफिक की स्थिति कर दी गई है कि पूरी तरीके से ये अब एक अवशेष के रूप में रह गया है और पूरा नेपाल में इसी तरीके के ऑफिसों के हालात कर दिए गए हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो अवशेष हैं वो सब पड़े हुए हैं, ये जो गाड़ियां हैं वो ऐसे ही जली हुई पड़ी हुई हैं और अब पूरी तरीके से यातायात ऑफिस कहीं ना कहीं अवशेष के रूप में बदल गए हैं। नेपाल से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव। ये लोग अगर एक अच्छा सरकार नहीं बना पाए और अपने बीच में ही इन लोग के बीच में एक सहमति न हो पाए तो राजा के साथ प्रजातंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस देश के मट्टी के लिए ये बिल्कुल सही व्यवस्था होगा, जिसमें हिंदू राष्ट्र भी होगा और राज संस्था एक अभिभावकीय भूमिका के रूप में इस देश में रहेगा। ये परिस्थिति आएगा तो देश के लिए बेहतर होगा, जैसे हमको लगता है। Now, Nepal's political landscape is at a crossroad, and the name that's being floated for interim Prime Minister is none other than Sushila Karki, the country's first woman Chief Justice. And despite a controversial past involving her husband's role in a 1973 hijack, Karki now stands as a beacon for Nepal's youth, demanding a break from corruption. So will she rise to power and shake the system once again? Here's more in our next report. Take a look. As Nepal tries to find a new leader, a dark past of one of its front-runners has come to light. Sushila Karki, Nepal's first woman Chief Justice, is now being considered as interim Prime Minister, possibly replacing the very man who once backed her, KP Sharma Oli. Known for fearless verdicts, Karki jailed a sitting minister and exiled the anti-corruption chief. But her own past is just as riveting. Her husband was involved in Nepal's first plane hijack in 1973, looting 30 lakh rupees to fund a revolt. The hijacking, masterminded by former Prime Minister Girija Prasad Koirala, was intended to fund an armed struggle against the monarchy. Bollywood actress Mala Sinha was on board that flight. Today, Gen Z protesters see Karki as a symbol of clean governance. She survived impeachment, changed the law, and shook the system. Now Nepal may once again turn to the woman who made history. But for Gen Z Nepal, Karki's past does not haunt, it inspires.
Youth protesters are demanding Karki, the anti-corruption icon, to lead a clean break from the past. Karki herself faced political wrath, suspended after an impeachment motion, only to return stronger. Now, as Nepal stands at a historic crossroads, it may once again turn to a woman who made history and shook the system. Bureau Report, India Today.